आपकी जो भी गवर्नमेंट है। Under this matter, the proceeds of certain selected taxes imposed and relied by the center, कुछ ऐसे taxes हैं जो कि center impose करके और realize करती है, are apportioned between the standard and different state. ठीक है, तो इसके बीच में बांट किए जाते हैं central और different states के बीच में. In India, the income tax and some union excise duties are taxes which are shared. कौन कौन से देखिए टैक्सेस बांटे जाते हैं, अभी बताया इसके यूनियन इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी. कौन कौन से इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज बांटी जाती हैं. This method of sharing the tax rate is however confronting with the various difficulties such as what should be the criteria in determining the share of tax out of the total tax need of the center. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों को ये हो जाता है कि सेंटर ने जितना तो हम अगर हम लोग इस तरह से चलते हैं तो हमें ये दिमाग में मुश्किल हो जाता है कि सेंटर ने कितना ये टैक्स लिया और स्टेट ने कितना टैक्स लिया. ठीक है, तो व्हाट पोर्शन ऑफ द टोटल नेशनल शेयर वुड बी असाइन्ड टू ईच स्टेट. तो टोटल जो नेशनल शेयर है उसके अकॉर्डिंग ईच स्टेट को कितना चाहिए. एक तो होता है कि एक स्टेट से टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इतना बांटना पड़ेगा इतना बांटना पड़ेगा, है ना. लेकिन पहले ही गवर्नमेंट बांट चुकी होती है, ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है कि नेशनल इनकम कितनी हो रही है और ईच स्टेट में उसको कितना बांट जाएगा. पूरी की पूरी जो भी सेक्टर की नेशनल इनकम होती है उसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज हर स्टेट को जाता है. ठीक है, तो ये सब चीजें निकालनी मुश्किल हो जाती है. And basically the share of center should be reasonably large to meet its nationwide functions. The share of each state can however be determined by the basis of actual need from the particular state, its population and total revenue and its total expenditure needs. ठीक है, तो basically जितना भी स्टेट का होता है आपका कलेक्टेड वो किस पे डिपेंड करता है, आपका पॉपुलेशन पे, टोटल रेवेन्यू पे और उसकी टोटल एक्सपेंडिचर पे या फिर जरूरतों पे डिपेंड करता है. Nevertheless, adjustment to complete and satisfaction of the different states may not be possible and state bound to feel a sense of frustration. ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट है आपको कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं होते हैं अगर उससे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बाउंड होए या फिर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर पैदा करने से. ठीक है, arbitrary decisions are thus inevitable. In India, for instance, a finance commission is appointed every 5 years by president to determine the share of each state in the division of taxes. बताया था मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल कमीशन बनाते हैं आपका. ठीक है, तो उसका क्या काम होता है बेटा, ये जो उनका काम होता है 5 साल फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है. उसमें क्या काम होता है, अलग अलग स्टेट में अपना टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना. नेक्स्ट है आपका रीएलोकेशन ऑफ फंक्शंस. अगर हम लोग एलोकेट फंक्शन का जो भी एलोकेशन है उसको दोबारा से देख लिए, अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो रीएलोकेट कर ले, तो भी आपका जो फंड का ये जो ट्रांसफर वगैरह है अपने टैक्सेस वगैरह का ये इनकम्स का वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ठीक है, sometimes when it is found that certain functions to assign to the state government can better than being carried out by the central government. कई बार ऐसा होता है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट को फंक्शन असाइन किए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से निभा सकती है. With the same efficiency, it is desirable for the center itself to take over such functions. तो ये सारी इसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, सेंटर की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो उस फंक्शन को टेक ओवर करना चाहती है या नहीं चाहती है. Thus, relieving the state governments of the administrative burden. तो स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन क्या हो जाता है बेटा, आपका रिलीज हो जाता है. ठीक है, कम हो जाता है. नेक्स्ट आपका स्टेट कंट्रीब्यूशन. There may be a provision for contribution or payment of state government to the center when the latter is in the need of large resource. There was practice in the USA at the time of first constitution when the national government had no powers of taxation, was solely dependent on the state system. एक बार ऐसा भी हुआ था, ये कह रहे हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, कि सारे के सारे जो टैक्सेस थे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे. सेंटर ने कुछ अपने पास
को हटाने के लिए कुछ चीजें कहाँ डाल दी गई, सेंटर में डाल दी गई, और कुछ चीजें कहाँ डाल दी गई आपकी कुछ तरह के इन्फॉर्मेशन कहाँ डाल दी गई, स्टेट में डाल दी गई। Such a system have been discarded in the modern time. तो देखो ये discard हो गया था modern time में, और it will not only make the center weak and subordinate to the states, ठीक है, ये खाली center को weak नहीं बना रहा था, उसके ऊपर dependent भी बना रहा था state के ऊपर, but hinder the progress of national planning and create immense difficulties to center meeting emergencies, ठीक है, तो emergencies meet करने के लिए भी क्या हो रहा था, center को बहुत ज्यादा difficulties हो रही थी। फोर्थ क्वार्टर है सप्लीमेंट्री लेवी। सप्लीमेंट्री लेवी पे भी ऑफ टू टाइप दो तरह की होती है, imposed on additional levy by the central sales tax, state taxes. However, as the state have their own rates of taxation, the latter method may not be practicable proposition. The first method is more desirable and practicable because the federation is in all federation. It is the states which need additional revenue to meet their growing commitments, and as such they should be authorized to impose supplementary taxes and federal taxes, ठीक है। सप्लीमेंट्री टैक्सेस में स्टेट को क्या कर दिया गया था, उनकी छूट दे दी गई है, जिससे कि आप लोग को जो भी चले जिस तरह से भी चले आप टैक्स लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, ठीक है। एडिशनल टैक्सेस गवर्नमेंट लोग से ले भी सकते हैं स्टेट वाइज। नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट्स में ग्रांट्स क्या होती है बेटा, ग्रांट्स होती है आपकी दान, क्या होती है, तरह से आप क्या कह सकते हैं, दान, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसे ऐसा वो ले लेती है, मतलब काम करने के लिए या लोन ले लेती है या फिर, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रांट क्या कहते हैं बेटा, ग्रांट, ठीक है। जब इनकम नहीं है स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, ठीक है, एक तरह से दान दे सकते हैं आप इसको। For making the necessary adjustment in the state resources, the central government has the constitutional power to make grants to the state government in the most federation of today, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपनी ग्रांट फेडरल कर सके, मतलब स्टेट्स को बांट सके, ठीक। Undoubtedly, the grant in aid from the central constitutes a more definite and dependable source of revenue of the state government than the method of sharing tax rate at the center, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी ये सबसे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि इजी वो है आपका, मोर डेफिनेट है, डिपेंडेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपका है ये, ठीक है, इसका आपकी स्टेट गवर्नमेंट का। Further, the grant may be regarded as an effective instrument for bringing up the gap between physical capacity and financial needs of the state government. और ग्रांट के जो फिजिकल कैपेसिटी या फाइनेंशियल नीड्स का जो गैप होता है आपका, जो फुलफिल नहीं हो पा रही होती है, इनकम और एक्सपेंसेस का जो गैप होता है, वो किससे फुलफिल हो जाता है आपका, किससे बेटा, ग्रांट से फुलफिल हो जाता है, ठीक है। It generally decided to give more financial help to backward state as compared to the rich and advanced state, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ये, जो भी बैकवर्ड स्टेट है उनको ज्यादा हेल्प मिलती है एज कंपेयर टू रिच एंड एडवांस स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब जो भी स्टेट ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको ज्यादा हेल्प मिलेगी, जो भी रिच और एडवांस स्टेट है उनको थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज से भी मतलब आपको बहुत ज्यादा जो गैप होता है वो क्या होता है, फिल होता है। Federal grant should not be arbitrarily determined. They must be based on some specific criteria as suggested above. In India, Finance Commission is appointed every 5 years, recommended to the Central Commission of Grant. ये कहना है मुझसे कि आपका arbitrary determined नहीं होना चाहिए कभी भी grant, हमेशा conditional होना चाहिए, criteria पे base करना चाहिए। और इंडिया में हम लोग क्या अपनाते हैं, प्रेसिडेंट हमारे क्या अपनाते हैं, 5 years के लिए क्या अपना देते हैं, फाइनेंस कमीशन बना देते हैं, ठीक है, जो ये सब चीजें हैंडल करते हैं। Moreover, the allocation of federal grant should be determined well in advance and should be valid for a period of time. तो एडवांस भी हो सकता है आपका फेडरल ग्रांट और वैलिड पीरियड टाइम के लिए भी होता है। Otherwise, a great deal in uncertainty and dissatisfaction may be caused to the state. Otherwise, क्या हो जाएगा, uncertainty या फिर क्या हो जाएगी, dissatisfaction हो जाएगा state। चलिए नेक्स्ट है आपका कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ग्रांट। कंडीशनल ये हो जाएगा बेटा, अगर आप कंडीशनल ग्रांट देते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस है
अदरवाइज वो कौन सा हो जाएगा बेटा, अनकंडीशनल ग्रांट। ठीक है, देखिए फेडरल ग्रांट्स में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों तरह का हो सकता है। कंडीशनल ग्रांट हम वेट फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पसेस, मतलब किसी काम के लिए बस पैसे दिए गए हैं तो कंडीशन लगाकर आपको पैसे दिए ग्रांट दिया जाए तो वो कौन सा होता है बेटा, कंडीशनल। ओके, therefore the state governments have the force to use such funds only for the purpose for which they are allocated। तो ये वाले जो ग्रांट होते हैं सिर्फ जिस पर्पस के लिए दिए गए हैं उसी पर्पस में आप एलोकेट करेंगे। कंडीशनल ग्रांट आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर नीड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो भी नीडेड है स्टेट के उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं irrespective of its financial capacity। For instance, educational grant may be paid according to the number of students of school going age in each state। जो भी एजुकेशनल ग्रांट दिए जाते हैं सच एज आपकी स्कॉलरशिप, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बेसिस पर दी जाएगी, है ना, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और कितने हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो स्कॉलरशिप से पैसे कहाँ खर्च होंगे, सिर्फ स्कॉलरशिप में खर्च होंगे, इधर उधर तो नहीं जाएंगे। तो एजुकेशन ग्रांट को आपका काम पर आएगा नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट या एज वाइज दिए जाएंगे। ठीक है, हर स्टेट को तो वो सारा पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, एजुकेशन में यूज होगा। तो बेटे ये इस तरह का ग्रांट क्या कहलाता है, कंडीशनल ग्रांट। ठीक है, although under conditional grant the state lose their freedom of action। कंडीशनल ग्रांट में फ्रीडम ऑफ एक्शन स्टेट अपना लूज कर देता है, बिकॉज़ अगर मांगा गया है पैसा कि पैसे चाहिए एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है, और स्कॉलरशिप के नाम पर आ गया तो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट और वही डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो जो पैसे को खर्च करने की फ्रीडम है स्टेट के पास, तो क्या हो जाती है, कंडीशन लगने से such grants are justified on the ground that the received states are made conscious of their financial responsibilities and functions and observe financial discipline and check unwise spending। ठीक है, तो unwise spending को चेक करने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्या दिए जाते हैं आपके कंडीशनल ग्रांट। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ पैसे दिए गए तो बस पहले तो डिपार्टमेंट ही उन पैसों को खाने बैठ जाएंगे, है ना, इधर उधर अपना सामने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कितना मर्जी बजाय काम कर लेंगे। ठीक है, अनकंडीशनल ग्रांट की बात करते हैं। अनकंडीशनल ग्रांट्स आर जनरली पेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। किस हिसाब से दिए जाते हैं, आपके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दिए जाते हैं एंड रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट स्टेट, और डिफरेंट स्टेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। दे आर डिवाइस्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन revenue and expenditure of the state government। ये इस गैप को फुलफिल करने के लिए आते हैं, revenue और expenditure को फुलफिल करने के लिए जो गैप होता है revenue और expenditure को मीट करने के लिए आपको दिया जाता है। Such grant also known as equalizing grants। Under such conditional grant there is no check or supervision by the center। तो इस वाले grant में सेंटर कभी भी चेक नहीं करता, कभी भी सुपरवाइज नहीं करता कि पैसे कहाँ खर्च किए गए, कहाँ नहीं किए गए। And the receiving states have full authority to use them in any way as they like। तो जो receiving state होता है उसको full authority होती है कि उसके जैसे मन करे वैसे use करें। However, the state government do not use them for projects which benefit the nation as a whole, but they use only for local purposes। तो जो state government जो होती है वो इसको इस हिसाब से यूज नहीं करती जो कि आपका मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह बना ले जो पूरे देश को बेनिफिट दें, वो लोकल यूज करते हैं। It will observe from what has been just said that conditional and conditional grants have their own merits and demerits। इसलिए कहा जाता है कि दोनों की अपनी own merits and demerits हैं। However, a combination of all the systems seems to be desirable and practical। जबकि अगर दोनों दिए जाए तो ये desirable भी है, दोनों को देखा जाए तो और practical भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।